We generated around 560 plus million impressions organically. Those creating property cards for the first time for people owning houses in the rural areas. We have a patent on a bits technology, which. But we were really guided by what we wanted it to be. In terms of the content consumption pattern has changed. Very competitive, very crowded. The objective is basically to democratize cancer care. I see a very bright future for retail industry. Technology now allows us to scale up. We also want to help patients become more compliant. If I look at the custom solutions market, it's almost about $1,500 billion. Your customers will not continue to be with you if you don't change here. We had adopted digitalization much earlier. Within a very short span of time, we are the number one operator in the whole of South India. If you are reaching out to a lakh people today, you would be reaching out to an entire globe tomorrow. We got those two brands and then immediately got into a few of the LFRs and there was no looking back. Hello everyone, and welcome to the 41st episode of Ascent Talks. My name is Ajit Panikkar, and I've been an Ascent member for over a decade. And I lead Nova, an air conditioning company, and Pure Blue, a tech-enabled startup in the air conditioning domain. And as usual, my co-host is Aleem. How are you doing, buddy? Fantastic. Good morning, everyone. My name is Ali Merchant. I lead a company called Synapse. We're an advertising and marketing company. I've been an Ascent member for the past 6 years. But since Ajit has been a member for more than 10 years, so he should be the one introducing what is Ascent. Yeah, you don't have to justify everything that I have to do, dude. But for every one of you guys who are joining us for the first time, Ascent is a not-for-profit organization that helps entrepreneurs grow their business. It was founded by Harsh Mariwala in 2012, Chairman Marico Limited, and has helped over close to 850 entrepreneurs. Ascent's key feature is its trust groups, where entrepreneurs can share experiences and ideas. And Ascent Talks is a weekly talk show hosted primarily to showcase Ascent members and their entrepreneurial journeys. So today we have a very interesting guest, and trust me, you're going to love to hear him. So Aleem, let's bring him on board and introduce our guest today. The reason Ajit is excited is because our guest today, Amith Agarwal, is from his trust group. So Amith Agarwal is the co-founder of AgriBazaar and Star Agri. He's been at the helm of some of India's most transformative agri startup. His passion for uplifting the farming community through sustained business approach has been the driving force behind many of his pursuits. The ventures that he has created impact scale with support from global investors. Currently, he's pursuing his third agri startup, AgriBazaar. The future of AgriBazaar is promising as Indian agriculture readies itself for its next digital disruption, which is coming from AgriBazaar. And in 2016, he ventured into integrating technology and agri-trading through AgriBazaar platform. In the past 36 months, the company has evolved into one of India's leading online marketplaces for the agrarian sector. Welcome, Amit, to the show. Thank you, Aleem. Thank you, Ajit. Thank you, Ascent, for inviting me on this forum. Yeah. Ajit, Amit, you come from a small town. Now, tell us your journey from the small town to this big disruptive technology that you are bringing. Yeah. So, Aleem, I born and brought up in Alwar. All through my childhood and till at age of 20 I was in Alwar, just grown up there, and I've seen this business, agriculture business since my childhood, because my father, he's involved in mandi adak business. So in in Rajasthan or Marwari, जैसे बच्चा होश संभालता है वैसे ही दुकान में बैठते हैं, भेज देते हैं, तो मतलब वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि करना है. Feel I came to Bombay in 2002 for my MBA, and after 1 year I realized that ये मेरे बस की बात नहीं है. So I joined Reliance Infocom. वो कैंपस में आया था तो थोड़ा उनको पटाया और वहाँ पे मैंने जॉब ले लिया. So 2003 I joined them and left my college in between, and I did not inform my family members that I have not completed MBA and I have joined Reliance. Yeah.
तो वो थोड़ा सा एक एडवेंचर लिया और फिर उसके बाद रिलायंस में उस समय एक नया प्रोडक्ट आया था, दिस धीरू भाई अंबानी Pioneer phone. So they launched Reliance Infocom. So I joined there and as a management trainee. And after 9-10 months, I realized that I have to be in agriculture sector because I know agriculture sector very well. So I started looking job in NCDX, which was a commodity exchange that was started that time in 2003 and 4. And that was pretty exciting for me, like जैसे हम commodity trade करते थे तो बहुत उसमें prices ऊपर नीचे, service sector, warehousing ये बहुत बचपन से देखते आए, तो उसमें मेरे को था कि इसमें, तो then I approached them, they said no we can't take this and that. Then I started, I joined a small company called Sunwin Group in 2004, and it was like they were international brokers for edible oil company. And after a year I left that company because my family members told, like if you are leaving Reliance and joining this small company तो शादी भी मुश्किल होगी तो शादी भी होना मुश्किल हो जाएगा, तो better, तो I मतलब I started my own financing business with ICICI Bank. And ICICI Bank, like I met through one of my friend, the ICICI Bank, and they were like developing a priority sector lending products and warehouse receipt-based financing product against commodities was, at initial stage. So I thought it is an interesting one because I know this business and I've seen this, commodity business since my childhood. So I proposed them, like, I want to start this business in my hometown, Alwar. And they were very happy and they supported me a lot. And they asked me first loss default guarantee. So I gave my, I talked to my father, brother, and my few of my friends. I gave my parental house as a mortgage to them as a guarantee, and I also gave them my relatives' properties and friends' properties. So total property worth of around 2 crore in 2004 that I had given that time, and I got around 20 crore limit from them. So I disbursed that limit, and they were very happy. They saw the track record, and they they kept increasing my limits, and it was a good, I was taking money at 7-8%, lending at 11-12%, and fulfilling, it was a quite fulfilling job because, there was no financial inclusion in mandis, traders, between traders and farmers. So I was asking them, why don't you store your commodity in my warehouse and I will give you money through ICICI Bank against your commodity. So that was the, quite exciting journey. Then I met my, other three wonderful partners, Amith Agarwal, Amit Mundawala, and Suresh Goyal. We used to meet in ICICI Bank, business meetings. Initially, we were, you can say rivals because, we all were from Rajasthan and we wanted to capture entire Rajasthan. But later on, we became friends and we thought, why don't we create a good organization in this space? So we put 10 lakh rupees. But before that, there was an interesting story. We spent 5 to 10 days in each other's house in bit and pieces because our family said partnership के धंधे चलते नहीं हैं. तो क्या नाम से एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो कर लो. तो first Amith Agarwal he came to my hometown Alwar. He came for lunch and then he spent the night. And then we went to other partner's house, Amit Mundawala. And then Suresh Goyal. So 6 months हमने इसी में थोड़ा सा करा, and we put around 10 lakh rupees as a equity capital. I shifted from Alwar to Jaipur. We thought let's start from Jaipur, and हमने हमारा सारा business थोड़ा merge कर दिया, activities merge करा. Then we started a company called Star Agri in 2007. We did a lot of brainstorm session and all. तो फिर वहाँ से हमने number of services start करा, professional agri warehousing services for farmers, traders, then financing services, then supply chain, and we recruited few people and we hired a good office. We used to live in that office, staying in that office, plus it was a 2 BHK kind of thing. 1 BHK, 1 room was for office, 1 was for our staying in Jaipur. So that's how we started, and from day one, we thought we will have a good corporate governance. So we our revenue year 1 was 4 lakh rupees and our auditor fees was 6 lakh rupees to KPMG. तो हमने थोड़ा corporate governance पे day 1 से रखा कि हमें company को थोड़ा
मतलब लाइक बड़ा करना है, तो और पूरा एक बिजनेस प्लान हमने बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे लाइक मतलब कंपनी को आगे हमने बढ़ाया. टुडे यू लुक एट आवर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज मोर देन 2000 and our revenues are more than 700 crore, profitable from last so many years. Almost the company is a debt free company. And सब इसके अलावा जो काम करते हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है. लाइक जो इनर सेटिस्फेक्शन होता है ना, इट्स बियॉन्ड मनी. लाइक जैसे फार्मर्स को थोड़ा एम्पावर करते हैं, ट्रेडर्स को करते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, तो उनको जो हम सर्विसेज देते हैं जो कोई नहीं दे पाता, तो एकदम अक्रॉस इंडिया, तो वो हमें बहुत मतलब इट्स इज लाइक कंप्लीट जॉय. सो आई एम इनटू माय हॉबी, यू कैन से, not in business. Amazing. To all our viewers, if you're kind of wondering, how few friends who are competing with each other and they built on a 700 crore company in the agriculture sector, here's a little video which will actually give you absolute clarity. A company that is, of course, invested by Temasek Singapore, and look at it actually what they do will give you more clarity. What a beautiful business they've built. AgriBoom, an advanced agri-tech tool by AgriBazaar. Digital profiles of farmlands are created using satellite data with machine learning and remote sensing. Farmers see the mapped farm on the AgriBazaar app. AgriBoom analyzes the farms using satellite data and detects the problem areas with precision scouting. It processes the crop phenology and generates crop details like area and crop age. Farmer gets the report and analysis of the crops, including soil type and climatic requirements. AgriBoom will provide tools to the farmer to decide what to grow and when to grow based on his farmland data. Various high-quality agri inputs are available on AgriBazaar Input Marketplace for a better and healthier yield. Kisan Safalta Card is provided to farmers for hassle-free and convenient access to buy inputs at a lower interest rate. AgriBoom generates farmer credit scores for financial institutions or banks. AgriKnow provides crop knowledge and advisory for farmers to understand their farms and crops better. Crop Calendar provides advisory services on best practices for crops growth from sowing to harvesting. Crop Calendar keeps a track. As the crop continues to grow, many diseases might affect the health of the plants. Crop Doctor, a feature where farmers can connect with experts to ask the kind of treatment is suitable for their crops. Once the crop is harvested and is ready to sell, on the AgriBazaar marketplace, farmers can list their trades to get the best value of their produce. Once the trade is complete, farmers can deliver the produce to the buyer at the dedicated e-Mandi center. On successful delivery, the farmer receives the payment via AgriPay wallet directly into his linked bank account. Our storage and logistics services make it easier for the farmer and buyer to get the crops delivered. AgriBazaar, digitizing the Indian agri value chain with technology and innovation. AgriBazaar, empowering billions of farmers to feed billions in India. What amazing. Yeah, Amit, that is fantastic. Thanks. It's absolutely beautiful. Yeah, but Amit, tell me something, it's such a, हम तो शहर के लोग हैं यार, हमें तो ये सोच में भी नहीं आ सकता है, because you have seen it from your childhood, you are able to actually innovate it, you understand the domain and everything. But tell me something, what are the opportunities in this age of digitization, even in the agriculture, which is the largest employer in our country today? What is the growth opportunities that holds for this business? So you see, we have around 14 crore farmers. So 14 crore farmers, it's a बहुत बड़ा एक ये pool है, and number of opportunities are there, like crop diversification. Right now, you see the last 30-40 years, farmer is in growing what he has been growing from last 20 years. So crop diversification एक बहुत बड़ा area है. Plus alternative income. अगर farmer को कोई company ये करवाती है कि मैं alternative income आपको generate करवाता हूँ. So that's another big area. The way Amul did. So today Amul is 55,000 crore company. So उन्होंने थोड़ा डेयरी को इस तरह से बना दिया कि फार्मर का डेयरी इज लाइक अ साइड बिजनेस. तो जो उनका मेन बिजनेस था उसके साथ उन्होंने डेयरी को इंट्रोड्यूस करा कि आप 2-3 कैटल लीजिए, मैं बेस्ट रेट पे आपके मिल्क खरीदूंगा और उसको फिर मैं मार्केट करूंगा और जो भी प्रॉफिट आएगा तो वो मैं आपको दूंगा. तो उस तरह का बिजनेस मॉडल जैसे अमूल ने बनाया, तो अब जो फार्मर का वो उस समय जो साइड एक्टिविटी था वो मेन एक्टिविटी बन गया है.
तो मतलब इस तरह का एक वो उन्होंने मिल्क में करा, ऐसा कितने नंबर ऑफ कमोडिटीज में हो सकता है, आप ये देखिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव इनकम प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज आप ये देखिए माइक्रो फाइनेंस 2006-7 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आई, उन्होंने अप एंड डाउन्स देखे, पर नाउ सी देयर लाइक बिजनेस, लाइक दे हैव स्केल्ड देयर बिजनेस ऑन द टू द रूफ। तो उसी तरह से फार्मर फाइनेंसिंग कैन बिकम अ वेरी बिग बिजनेस। अभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ हुआ ही नहीं है इंडिया में, और एज पर सेंट्रल बैंक लाइक RBI, the 18% portfolio should be in agriculture. Every bank is seeking for priority sector lending. So any company like who is into farmer financing, develop expertise, can become $1 billion company in 4-5 years. So that's a very big area. और आज के ज़माने में हमारे पास डेटा बहुत है, लाइक कि फार्मर क्या ग्रो कर रहा है, उसका कैश फ्लो क्या होगा, 4-5 महीने बाद उसके पास क्रॉप आएगा, क्या रेट बिकेगा, क्रॉप को क्या रिस्क है, वो डेटा अब तक हम कर सकते हैं, और उसका मिटिगेंट क्या हो सकता है। तो एक वो एरिया मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंडिया में बनने वाला है। प्लस जैसे ये बायो सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इसका पूरी दुनिया आज ऑर्गेनिक की बातें करती है, तो बायो फर्टिलाइजर और बायो सीड्स का एक बायो केमिकल्स का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड इट इज़ बिकमिंग अ वेरी वेरी बिग बिजनेस ग्लोबली। इसके अलावा आप देखिए क्लाइमेट चेंज इज प्रोवाइडिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज इन फार्म सेक्टर। If you have right data, so you can develop a carbon credit business, and a lot of takers are there for that business. So number of opportunities are there. So up to next 10 years is for agriculture, I would say, and for us also because we have been in this business from last 15 years. तो अपना तो समय आ गया। Awesome. Amit, you make this all sound so easy. हम लोग सबके अंदर business ideas आने लग गए, but I'm sure there were challenges. Tell us what kind of challenges you faced in this journey, because I'm sure it was not an easy ride. What are the tough parts of this journey? देखिए, tough part is like you can say manpower recruitment. It's a like a rural business. When I recruit people from top-notch colleges, management people, so they are not willing to go at at a smaller town. Yeah. So like they feel that they are downgrading their lifestyle. And everybody wants to live in Bombay, Bangalore, Delhi, Gurgaon, ये सब है। तो एक वो चैलेंज मैं फेस करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बड़े शहरों में रहना चाहते हैं, छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉय बन के। तो मैन पावर का एक बहुत बड़ा इशू होता है। सेकंड, दिस एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक कैन नॉट गिव यू लाइक प्रॉफिट सो इजी, इट्स अ थिन मार्जिन बिजनेस, तो इसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे इसमें जो 0 से 1 की स्टोरी होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। 1 से फिर 10 थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। सो अभी जैसे लाइक वी स्टार्टेड AgriBazaar in 2016 एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अब ये देखिए 5 साल लगने के बाद नाउ लाइक वी हैव रीच्ड अप टू 1000 crore rupees ऑफ मंथली GMV, पर इसको करने में 5 साल लग गए। वेयरएज लाइक अगर कोई कंज्यूमर बिजनेस होता तो वहाँ पे आप ये 4-5 महीने में करते हो, पर इट्स अ लॉन्ग, आवर बिजनेस सस्टेनेबल है बहुत, ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो फार्मर को जैसे एजुकेशन धीरे धीरे होती है, अवेयरनेस धीरे धीरे होती है, फिर वो बिलीव इतनी जल्दी आसानी से नहीं करता फार्मर। तो वो एक बड़ा एक चैलेंज आता है, उसको प्रैक्टिस उसकी चेंज करना जो इतने सालों से वो कर रहा है, तो वो एक चैलेंज हमारे सामने HR का। और एक समझो जो हमारे कस्टमर्स हैं फार्मर, उनका ट्रस्ट जीतना मतलब उतना आसान नहीं है इनिशियली। अमित, ये आप इस इंडस्ट्री को और जैसे एग्री सेक्टर को इतनी करीब से जानते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं समझता हूँ कि सब व्यूअर्स जो भी होगा, भले वो बिजनेस हो या नहीं हो, उनका सब में एक ही क्वेश्चन है, यार 70 साल हुआ, आज भी हम महाराष्ट्र में हम रहते हैं, तो वहां पे भी आज हम फार्मर सुसाइड सुनते हैं, और कभी ना कभी ये लगता है कि यार 70 साल के बाद ये फार्मर सुसाइड इज अनबिलीवेबल। तो आज आप हमें ये बताइए कि ये पहले होता क्यों है? Why does this? We don't hear about farmer suicides in other countries and everything where agriculture is in every economy plays a big role. Why does it happen, and how do you think we can fix it? अजीत यार देखो, इसमें ये होता है डेट की वजह से। फार्मर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लोकल फाइनेंसेस। तो जब वो लोकल फाइनेंसेस वो हायर इंटरेस्ट पे ले लेता है, then there is a social obligation, or sometime like crop gets fail और उसका debt burden बढ़ जाता है और he cannot pay। तो because of social pressure and other things, fear जो mind में होता है, उसकी वजह से वो फार्मर सुसाइड करता है। अभी डेट आता क्यों है? तो डेट इसलिए आता है, तो बैंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड्स की लो चीप रेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड, फार्मर्स के पास अगर कोई क्रॉप फेल हो जाती है तो उसका रिस्क मिटिगेशन टूल नहीं है।
अगर वो रिस्क मिटिगेशन टूल है भी तो उसको पता नहीं है। थर्ड, फार्मर्स के पास अवेयरनेस नहीं है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, कि कौन सा क्रॉप ज़्यादा प्रॉफिट देगा या कौन सा क्रॉप इस साल उगाना चाहिए। ये 2-3 कारण होते हैं कि जिसकी वजह से मतलब वो डेट में आ जाता है फार्मर, और उसकी वजह से उसको फिर वो सुसाइड करना पड़ता है। अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइक फार्मर इज मोर अवेयर। जैसे वहाँ पर नाउ दे आर ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 20 years मस्टर्ड, एंड मस्टर्ड गिव्स देम 30% प्रॉफिट। दे आर ग्रोइंग पल्सेस विच गिव्स देम 25% प्रॉफिट। तो वहाँ पे सुसाइड के केसेस बहुत कम है कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड आंध्रा, ये चीज़ है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और का एक बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, कि जो हमें इसको फिक्स करना है कि फिनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। तो जैसे आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि भाई आपका पोर्टफोलियो 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, तो वो ट्रूली होना ही चाहिए। प्लस आरबीआई शुड आल्सो अलाउ एनबीएफसीज टू लैंड इन एग्रीकल्चर एंड गिव देम स्पेशल स्टेटस। जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लैंड करने के लिए। और आप देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी शुरू में 5-6 साल जरूर डिफिकल्टी में थी, पर अब पिछले 10 साल से ऐसा कोई लंबा चौड़ा डिफिकल्टी नहीं है। इट्स लाइक दे आर लैंडिंग टू अ ग्रुप and every group member is responsible for complete repayment of the complete debt for that particular group. So जब उसका बेस बन जाता है तो फिर कंपनी बड़ी बन जाती है। तो बंधन बैंक का आप स्टोरी देखिए, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थे, आज इतना बड़ा बैंक बन गया है। एयू का देखिए आप, वो भी स्टार्टिंग में उन्होंने कॉमर्शियल व्हीकल से शुरू करा, फिर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी शुरू करी, और आप देखिए तो बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये कि फार्मर फाइनेंसिंग को ईजी बनाया जाए, और ये ऑल्टरनेटिव होने चाहिए कि अगर फार्मर की क्रॉप फेल होती है तो वो उसके हैंड में नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइक ड्रॉट और अदर रीजन फेल हो जाती है, तो उसका उसका टेन्योर लंबा मिलना चाहिए। एक तो ये मैं मानता हूँ कि होना चाहिए। सेकंड, फार्मर का ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट होना चाहिए, जैसे अमूल ने करा। अब जैसे मैं वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी हूँ, तो अभी फार्मर को वेयर हाउस बनाना है, वो बना ही नहीं सकता। उसको 7 years का लोन मिलता है वेयर हाउस बनाने के लिए। वेयर हाउस जो बैंक का प्रोडक्ट है, मिलना चाहिए 30 years का, जैसे हमें होम फाइनेंस में मिलता है। और सेकेंडली, फार्मर की जो लैंड है वो उसको लैंड को इक्विटी मानना चाहिए। कि अभी क्या होता है, जैसे बैंक ने 100 रुपये का लोन देगा तो बैंक कहेगा भाई 25 रुपये आप अपने लगाइए, 75 रुपीज़ हम लोन देंगे आपको। तो फार्मर के केस में 100 रुपीज़ का लोन मिलना चाहिए, और एज ए सिक्योरिटी उसकी लैंड आनी चाहिए, और 30 years का लोन मिलना चाहिए। तो जैसे ऐसे ही फार्मर को जैसे प्रोसेसिंग, छोटी प्रोसेसिंग के लिए ईजी लोन मिलना चाहिए, जिससे कि फार्मर को हम फार्मर ना के मान के उसको एक लेवल उसका ऊंचा कर दें, लाइक उसको ट्रेडर बना दें, या उसको हम एक प्रोसेसर, स्मॉल प्रोसेसर बना दें, तो फार्मर का ये एम्पावरमेंट होगा, उसके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ऑल्टरनेटिव इनकम, इजी फाइनेंसिंग एंड एजुकेशन, दे आर 3 things which can avoid these suicide cases. Very interesting. Amit, on one side you're dealing with farmers who are not so financially savvy, and on the other side you're dealing with investors, some of the largest investors on board. Tell us about your investor. How do you get these investors? Tell us the stories around that. And how does an entrepreneur get such kind of investors on board? Yeah, so we have 2 investors, InvestCorp and Temasek, and both investors, they believe in India story. They also believe in agriculture as a large, as a big opportunity in India and around. And they saw our business is sustainable and it is not like a cash burning model. And they invested in that. And in our case, as I said, from day one, we maintain our corporate governance. Although we are 4 friends, we are not family members, and we have not recruited any, single family member of our, in the entire journey. So, इस तरह का उन्होंने जो practices देखा हमारे यहाँ पर कि यार ये लोग तो अपनी कंपनी को मतलब जैसे टाटा जैसे प्रिंसिपल पे चलाते हैं, तो एक वो कंफर्ट उनको आया कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बिग 4 ऑडिटर अपॉइंट होते हैं बाद में, तो हमने हमारे यहाँ KPMG 10 years ऑडिटर्स थे, तो उन्होंने देखा कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं इनके पास में, एंड these guys runs company very professionally. It's our company is a founder plus professional run company. Every company has a CEO and a CFO. We have 3 companies, and they run the show. And we are as a role of mentorship. कि हम लोग mentorship देते हैं और हमारा रोल होता है कि सेल्स को बढ़ाना. बाकी चीज़ें जो हैं सब जैसे फाइनेंस है, HR, टीम बिल्डिंग, इट्स रन बाय प्रोफेशनल. तो हमारा मेन रोल है कि भाई हम सेल्स को कम नहीं होने देते. सेल्स रेवेन्यू आना चाहिए कंपनी में. सेल्स we are all salesmen in our company. Founding team is a salesman. तो सेल्स का जॉब हमारे पास में है. तो इन्वेस्टर ने ये सब देखा कि यार इनके ये बड़े फोकस लोग हैं और कंपनी में बहुत प्रिंसिपल ड्रिवन है और एक सेक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है और इनका बिजनेस मॉडल बहुत सस्टेनेबल है. देखिए हमारा कोई लॉस का मॉडल है नहीं. हम हमारे 3 लाइन है रेवेन्यू के. वन इज अ वेयर हाउसिंग रेंट,
which there is no risk in that because somebody is taking my place, is giving me rent, और उसका हर साल क्रॉप होनी है और उसमें उसको कहीं ना कहीं रखना ही रखना है. Second is financing, you can say spread which we earn from bank. So we ensure bank that quantity and quality, कि मेरे warehouse में जो quantity रखी है, quality रखी है, it's up to the mark. And bank finance it. We help bank to develop financing portfolio. So on top of it, bank gives us on the same material some commission or some spread they share. So वो है, तो उसमें भी हमारा कोई ऐसा risk नहीं है. Then we again try to provide platform to sell farmers crop on better price. कि farmer घर बैठा अपनी crop online बेच सकता है. And we get some commission from bank. So it's a service business model. And हर साल crop होनी है. और हमारे पास 2 या 3 सीजन आते हैं, कुछ पार्ट में 3, कुछ में 2 आते हैं पूरे इंडिया में. तो ये थोड़ा रिस्क फ्री बिजनेस है जहाँ पे कैश बर्न नहीं होता और बिजनेस ग्रो हो रहा है हमारा ईयर ऑन ईयर 25% 30% बिजनेस ग्रो हो जाता है. ये चीज़ है. और आर एम इज कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि बिजनेस अपने आप 15 से 20% ग्रो हो हर साल. और रिटर्न ऑन इक्विटी पे वी आर वेरी फोकस्ड कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 12 to 15% बनना ही बनना चाहिए. धंधे में जितना पैसा लगा हुआ है उसका 15% ब्याज आना ही आना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें देख के फिर इन्वेस्टर को बहुत एक्साइटमेंट आता है. तो अभी जैसे दिस सेक्टर इज डूइंग वेल, वी आर आल्सो डूइंग वेरी वेल. मैं एक क्वेश्चन हमसे और एक पूछना, थोड़ा सेंसिटिव है पॉलिटिकली, लेकिन यार आप ही एक सही आदमी हो जो इसका आंसर दे सकते हैं. मोदी सरकार ने बड़ा फार्म रिफॉर्म्स लेके आया था, ठीक है, और उस पे बहुत चिल्लम चिल्ली हो गया एंड देयर वाज ह्यूज प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग. एंड post that there was a major issue around it and then the government withdrew. What are your thoughts around this? I mean, were the reforms good, were the reforms not good? Not getting too much into details, but kind of a broader input as to what do you think about it because of your closeness with the industry. अजीत, बहुत डांट पड़ेगी दोनों साइड से. अगर एक भी साइड क्योंकि आपने ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जब काम करते हैं और इधर फार्मर कम्युनिटी के लिए भी करते हैं तो हम थोड़ा क्वेश्चन पूछा है. हां, मतलब पहली बार है तो मौका ले लो यार, पूछ लेता हूं यार. तो आई वुड से both sides are I would say both sides are losers. Government could not communicate their positive intention towards farmer community on time. Might be their approach was wrong or you can say in hurry, and farmer could not understand these reforms properly. And few of the farmer groups they lead that operation and so end result is दोनों lose है, दोनों बात भी नहीं कर रहे reforms की. एक fear factor आ गया है. So it is not good for both the end, I would say. And one reform was where farmer can sell anything, any crop, their produce to anyone across India. वो उन्होंने क्यों मना करा? वो it's beyond understanding. ये थोड़ा editable होना चाहिए था. complete ऐसे नहीं होके कि ठीक है इसको गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट को फार्मर के साथ बैठ के इनको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए था, ना कि इसको एकदम स्टॉप करना चाहिए था. तो मुझे लगता है कि वो दोनों साइड ने बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लूज करा है, बहुत बड़ा. नहीं तो ये जो 10-15 years का जो जर्नी था वो शॉर्टर होके 5 साल में हो जाता. ये चीज. Amit, we're almost ending of the show, but I want to know about your Ascent journey. You and Ajit both are in the same trust group, so give us some gossip. So यार देखो, गुरु और चिला है. Ajit is my guru, and Ajit has been there in the last 10 years, and I am here for last 5 to 6 years, you can say. And because of Ascent, when I joined Ascent, so I was at my, you can say, lowest in my entrepreneurial journey. And these guys, helped me a lot, providing me right advice. फिर इनका जो management style है, करने का leadership style है, I was lacking at leadership skills. So I learned a lot of things which I could not learn, during my, initial days. But मैंने बहुत कुछ सीखा और every month we learned a lot of things. तो मेरे को तो Ascent का बहुत बड़ा help मिला है. Every month we meet, we discuss various things, and it's all about leadership यार. आप कितने अच्छे लीडर हो, आप किसको कितना साथ लेके चलते हो, ये चीज़ है. तो जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो मैंने Ascent से ही सीखे हैं, ऑनेस्टली. जो मेरा ट्रस्ट ग्रुप है, इन्हीं से मैंने सीखा है. एंड अगर हमारे सभी ट्रस्ट ग्रुप में जो मेंबर हैं, बड़े मार्की मेंबर्स हैं, तो और सबने अप एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और तो
इसलिए अजीत के बाल ऐसे ही ग्रे नहीं हुए। लेकिन मेरे बाल अभी भी है, पूरे बाल, मेरे पूरे बाल अभी भी है। बहुत हेल्प करते हैं, और नॉट ओनली प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनली लाइक यू नो राइट फ्रॉम किड्स एजुकेशन, कैसा एजुकेशन होना चाहिए किड्स का, ये सब कुछ। HRT में जो चैलेंज आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं एक दूसरे से। Amazing, Amith. Amith, we are just down to our 30 minutes, but yeah, as usual, I know you for the last 6-7 years, and it is still fun listening to you. You there's so much of knowledge, there is so much of learning, and you're an inspiring story. Your journey from Alwar to a 700 crore globally invested company is fantastic and is inspiring. So thank you so much, Amith, for taking time out for Ascent Talks today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for inviting me here. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Wow, that's I mean, I know him very well, and he's such an inspiration. I know he has so much knowledge. It could have easily been a 60-minute show. Completely, and I can tell you, I meet him every month, and I can still keep talking to him, and he brings in a certain sense of wonderful energy, and that energy is fantastic. It's just like a positivity. So well, that's a great story we had today, and all of you guys get to ascentfoundation.in and put in your application if you're an entrepreneur and a growth-ready entrepreneur, and an Ascent team member would get in touch with you. And if you're truly growth-ready, we'll be happy to have you in our cohort. So thank you very much. That's all for our 41st episode. And we're going to see you next Friday at 11 a.m. with another interesting entrepreneurial journey of an Ascent member. Thank you very much. Have a brilliant weekend. Take care. Bye-bye. Bye-bye.